Start. Hello, everybody. Thank you for joining this Facebook live session on bone cancer. I am Dr. Chetan Anshan, consultant orthopedic oncosurgeon at Surya Hospital. मैं पिछले 18 सालों से बोन ट्यूमर्स के फील्ड में काम करते आ रहा हूँ. So I am a surgical oncologist dealing specifically with all forms of bone tumors and bone cancers. I'm sure आप लोग को पता ही है what is cancer, so I won't go into the details of what is cancer. But ये आपको पता होना जरूरी है कि बोन में भी कैंसर हो सकता है. So bone is also one of the organs in the body where you can get cancer. As you all know, bone or any form of cancer is a life-threatening disease. मतलब ये जानलेवा बीमारी है और इसको जल्दी से पकड़ना, डायग्नोस करना और उसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है. Before we go into details of bone cancer, most important information आपको ये जानना है कि bone cancer में दो मेजर टाइप्स हैं. इनफैक्ट देयर इज अ थर्ड टाइप आल्सो, उसके मैं ब्रीफली आपको आइडिया दूंगा. बट इन जनरल देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बोन कैंसर. एक है प्राइमरी बोन कैंसर, दैट इज ये बोन से ही निकली हुई कैंसर है, बोन में बनी हुई कैंसर है. सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज ट्रू बोन कैंसर्स. मतलब ये जेन्युइन बोन कैंसर है. These are called as sarcomas. ये एक फैमिली ऑफ कैंसर है जिसे बोलते हैं सार्कोमा. सार्कोमा में बहुत सारे फैमिलीज हैं. कार्सिनोमा इज वन फैमिली ऑफ कैंसर. Sarcoma is another family. Leukemia is another family. So there are various families of cancer. उसमें से sarcoma is what we deal with musculoskeletal cancer. मतलब बोन एंड बोन के आसपास के मसल्स में जो बनती है कैंसर, उसे कहते हैं sarcoma. Besides this primary bone cancer, which we also call as true bone cancer, we have what is called as secondary bone cancer. Secondary bone cancer is ये बीमारी, ये जो कैंसर है जो बोन में दिखती है वो बोन में नहीं बनी हुई है. This is what we call as metastatic cancer. मतलब ये कोई दूसरे ऑर्गन की कैंसर है जो बोन में स्प्रेड हुआ है. Like it could be a breast cancer जो बोन में गई हुई. It could be lung cancer which has gone to bone. It could be a thyroid cancer which has gone into bone. Or it could be kidney cancer which has gone into bone. Means this cancer has originated from some other organ which has spread to the bones. So इन्हें कहते हैं secondary bone cancer. And briefly I will just tell you about the third form of cancer which can present in the bone. These are all bone marrow related cancers. So इसमें सबसे important कैंसर है मल्टीपल माइलोमा, जो बोन को बहुत सारा डैमेज करती है. इसे ट्रू बोन कैंसर नहीं माना जाता है एंड इट इज नाइदर अ सेकेंडरी बोन कैंसर बट इट इज अ कैंसर कमिंग फ्रॉम द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन द बोन मैरो. वी वोंट गो टू मच इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. आज मैं आपको प्राइमरी बोन कैंसर एंड सेकेंडरी बोन कैंसर के बारे में ब्रीफ आउटलाइन देने वाला हूं. सो सबसे पहले ये सवाल मेरे पास आता है पेशेंट का कि इसके सिम्टम्स क्या हैं. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बोन कैंसर? So as you can imagine, the most common two symptoms of any form of bone cancer is swelling and pain. मतलब एक कई जगह पे सूजन फील होता है या दिख जाता है. That is one of the symptoms. Besides that, patient को definitely some form of pain का complaint रहता है. So bone cancer is notorious for primarily pain. In fact, most of the cancers का जो pain related symptoms है is often associated with the spread of disease to bone or a cancer which has come from the bone. Swelling या तो दिख जाता है या हाथ लगाने पे पता चलता है, और उसके साथ साथ या उसके पहले पेन हो सकता है या उसके बाद पेन का प्रेजेंटेशन हो सकता है. Now this kind of pain is what is called as persistent pain. मतलब बोन कैंसर रिलेटेड पेन शुरुआत में कम हो सकता है, आगे जाके धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. एनी फॉर्म ऑफ कैंसर रिलेटेड पेन अपने आप से कम नहीं होता, अपने आप से जाता नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है.
शुरुआत में आपको शायद कभी कभी पेन महसूस हो एंड इट मे गो अवे ऑन इट्स ओन, बट वो फिर आता है एंड इवेंचुअली आप ये नोटिस करते हो कि जो पेन आपको ओकेजनल होता था अब ज्यादा ही फ्रीक्वेंट होने लगा है। मतलब उसका इंटरवल जो आपको शायद हफ्ते में एक बार पेन होता होगा, इट कैन नाउ बिकम अ डेली इवेंट एंड समटाइम्स इट मे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम थ्रू आउट द डे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन ड्यूरेशन। दूसरा है पेन का इंटेंसिटी। जो पहले आपको टॉलरेबल पेन था अब आपको थोड़ा तकलीफ होना लगा है, आपको वो पेन टॉलरेशन से बाहर जाने का महसूस हो रहा है। सो यू फील दैट दैट पेन इज नाउ वर्सनिंग एंड इट इज बॉदरिंग यू एंड आगे जाके दैट पेन कैन बिकम इवन मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। आपको शायद आपके मूवमेंट में फंक्शन में तकलीफ महसूस हो सकता है। सो दैट इज हाउ दिस कैंसर रिलेटेड पेन प्रेजेंट्स व्हिच इज प्रोग्रेसिवली growing more frequent, which is progressively worsening and eventually आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। So these are the two most important symptoms of bone cancer. Besides that, एक third major presentation आता है which is called as some sort of skeletal event। मतलब इसमें ट्यूमर की वजह से हड्डी कमजोर हो सकती है और कमजोर होने के बाद ये हड्डी टूट सकती है। इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज द थर्ड काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ बोन रिलेटेड ट्यूमर कंडीशन। जो हड्डी नॉर्मल एक्टिविटी या माइनर इंजरी से नॉर्मल मतलब टूटती नहीं है या इंजरी नहीं हो सकती, पैथोलॉजी होने की वजह से वो कमजोर हो सकती है और रूटीन एक्टिविटी या माइनर फॉल या माइनर इंजरी से वो हड्डी टूट सकती है। ऐसे फ्रैक्चर्स को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। सो दैट कैन बी वन मोर वे इन विच पेशेंट्स ऑफ बोन कैंसर कैन प्रेजेंट। और एक मेजर प्रेजेंटेशन है, अगर ये बीमारी स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी में फैल गई तो रीढ़ की हड्डी में फैलने की वजह से पेशेंट को बैक पेन का प्रेजेंटेशन आ सकता है। बैक पेन जो प्रोग्रेसिवली वर्सन हो रहा है, प्रोग्रेसिवली सीवियर हो रहा है एंड जब ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है, ये ट्यूमर बोन को गल के रीढ़ की हड्डी से जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है उसके ऊपर दबाव आने के बाद पेशेंट को पैर में कमजोरी महसूस हो सकती है या नमनेस हो सकता है या उनका पूरा मूवमेंट बंद हो सकता है और ब्लैडर और बावल फंक्शन मतलब जो टॉयलेट का जो फंक्शन है उसका कंट्रोल भी निकल सकता है। सो दिस इज द अदर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब पेन, स्वेलिंग, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ये 4 प्रेजेंटेशन सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर दैट कैन समटाइम्स हैपन इज डिसेबिलिटी। मतलब आपको लगता है कि पहले मैं ये काम कर सकता था, अब ये काम करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो मूवमेंट या वो फंक्शन में मुझे पेन हो रहा है। सो दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ बोन कैंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई गेट फ्रॉम माय पेशेंट्स इज कि ये कैंसर किसको हो सकता है, हु आर वल्नरेबल। मतलब ये बीमारी का लक्षण क्या है, हाउ डू वी नो कि मुझे होने वाला है या इसको होने वाला है। सी इम्पोर्टेंट थिंग इज इसका कोई कारण नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी बोन कैंसर जो बोन में निकलती है उसका कोई कारण नहीं है, बट टिपिकली ये यंग पर्सन्स की बीमारी है। सो मोस्ट ऑफ दोज हु हैव बोन कैंसर आर जनरली बिलो द एज ऑफ 20 एंड मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप है 10 to 20। मतलब जो टीनेज ग्रुप है दे आर मोस्ट वल्नरेबल। सो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी बोन कैंसर्स हम इस एज ग्रुप में देखते हैं। सो someone who is from the age of 5 to 20, if they have some bone pain या bone swelling जो persistent है, जो वर्सन हो रहा है, तो we are always very alert to look for the possibility of bone cancer in these patients. Besides that, the other age groups are, एक जो बीमारी है जो 20 to 40 के एज ग्रुप में आती है, these are जनरली ये एज ग्रुप में एक बिनाइन ट्यूमर है जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है, उसे कहते हैं जायंट सेल ट्यूमर। सो ये एज ग्रुप में ये वाली बीमारी का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। एंड बियॉन्ड द एज ऑफ 40 अगेन दिस इज द एज फॉर सेकेंडरी बोन कैंसर्स। मतलब कैंसर कोई दूसरे ऑर्गन में हुआ है लाइक ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, किडनी, थायराइड या कोई और ऑर्गन, वहां का कैंसर बोन में फैल सकता है। और जनरली दीज आर द पेशेंट्स हु प्रेजेंट एट दिस एज ग्रुप आफ्टर द एज ऑफ 40।
मल्टीपल मायलोमा जो बोन मैरो रिलेटेड कैंसर है वो भी जनरली आर सीन इन द पेशेंट अबाउट द एज ऑफ 40. The other important question is कि इसका cause क्या है? Why does it happen? Most of the bone cancers का कोई cause नहीं है. It can just happen to anybody. Anybody is vulnerable to this cancer. And of course, secondary bone cancers जो bone में spread हुए हैं, these are generally happen to those who already have some pre-existing cancer of some other organ like breast, prostate, lung, thyroid. Sometimes ऐसे होता है कि जिनको secondary bone cancer है उनका डायग्नोसिस ही बोन में बीमारी आने के बाद होता है. मतलब दे आर नॉट अवेयर कि उनको कोई कैंसर है. सो देयर डायग्नोसिस हैपेंस आफ्टर द डिजीज स्प्रेड टू द बोन एंड उसके बाद उसके वजह से जब पेन होता है या स्वेलिंग आता है या फ्रैक्चर होता है, जब उनका वर्कअप होता है तब ये पता चलता है कि इनको कोई और कैंसर है जो बोन में फैला हुआ है. So as I said, presentation of bone cancer is pain, swelling, pathological fracture, and back pain with sometimes paraparesis या paraplegia, मतलब weakness in the legs and weakness and loss of bladder and bowel control. So when I say all this, तो सबका सवाल मन में सवाल ये आता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं? When should we worry or when should we seek attention from our doctor for such a possibility? See, when I am talking all this, let me reassure you, whenever you have any of these complaints, almost 95% cases में this is due to some other cause. बोन में इन्फेक्शन हो सकता है या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन कमजोर हुआ हो सकता है, उसके वजह से पेन पॉसिबल है. समटाइम्स यंग पीपल में it could be some sort of infection in the bone, osteomyelitis बोलते हैं. These are far more common causes, and beyond that there are lot of benign bone tumors and tumor like conditions. मतलब ये non cancerous tumors है, they are far more common. So whenever you have some sort of swelling or pain which is related to bone, please don't ऐसे आप ये मत सोचिए कि ये कैंसर ही है. कैंसर होने का पॉसिबिलिटी रियली कम है, बट उसके वर्कअप होने के बाद ही हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं. So, but you should be alert to this possibility and seek attention from your doctor. Generally what I advise is, अगर आपका pain is persistent for more than 3 weeks और वो pain in these 3 weeks has worsened, मतलब pain बढ़ गया है, pain का intensity बढ़ गया है या duration बढ़ गया है, तो you should certainly seek attention from your doctor. अगर पेन कम हो रहा है and you are feeling better, then I don't think there should be any cause for worry. But seeking attention from your doctor is always a good idea whenever you have persistent or worsening pain of 3 weeks or more duration. अगर कोई swelling आपको दिख रहा है या महसूस हो रहा है, then you cannot really delay seeking your doctor's attention. Swelling is clearly a sign कि bone में कुछ तो growth है. Again, majority of the causes of swelling may be benign, non-cancerous conditions या infection हो सकता है. So we should not get scared, but at the same time should not ignore these findings. अब bone cancer का workup कैसे होता है? See, for any bone tumor, the first workup is a proper X-ray. Get a proper X-ray first. X-ray में and patient का age and symptoms जान के almost 80 to 90% cases में we get to know what could be the possible cause of this. Besides X-ray, we also get to do some sort of advanced imaging. In majority of the patients, we need to do a MRI. MRI से इस बीमारी का extent, local extent, मतलब कितना बड़ा है, हड्डी में कितना फैला है, बोन कितना डैमेज्ड है, ये जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं, और आजू बाजू के सॉफ्ट टिश्यू को कितना अफेक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है या नहीं. All these things we get to know when we do an MRI. So X-ray and MRI are the most commonly used modalities of investigating any sort of suspected bone tumor. Majority in say almost 60-70% cases में on the X-ray and MRI and clinical imaging we get an idea of what we are dealing with. So at that time we take a decision कि इसमें और आगे बढ़ना है
या हम इसी सिचुएशन पे पेशेंट को ट्रीट करके वी विल जस्ट ऑब्जर्व दिस पेशेंट. सो व्हेन वी फील वी आर डीलिंग विद अ बिनाइन bone condition, yeah, non-aggressive kind of bone condition, then we may just stop our workup there and treat the patient symptomatically and patient को हम observation में रखते हैं. But when we suspect कि there is a possibility of this being aggressive, या हमें इस imaging modality से हम ये नहीं समझ पा रहे कि exactly हो क्या रहा है, so then we need to do further investigation, and उसमें we may do certain blood tests, but blood tests will rule out certain conditions. I won't go into the details of that. But besides that, the one of the most important investigations in reaching a diagnosis for any tumor, forget about bone tumors, is a biopsy. Biopsy क्या है? Biopsy में we take a tissue sample from the tumor. उसका एक टिश्यू सैंपल लेके हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंदर काफी सारे प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसिंग के बाद स्टडी करके हमें एक रिपोर्ट देते हैं. जनरली दिस इज व्हाट एस्टैब्लिशेस द डायग्नोसिस. उसमें in majority of cases we get to know कि what we are dealing with, whether it is a bone tumor, whether it is cancer, whether it is metastatic cancer, whether it is a primary bone tumor. अगर primary bone cancer है उसमें भी कई सारे types है, like osteosarcoma, Ewing sarcoma, chondrosarcoma, chordoma. These are various types of primary bone cancer. So primary bone cancer is not a single diagnosis. उसमें बहुत सारे subtypes हैं. ये भी जानना जरूरी है क्योंकि उसका exact treatment उसके ऊपर निर्भर करता है. We'll come into that briefly. We'll cover it in a little while. So biopsy is a very important step in diagnosing the bone cancer. Biopsy generally एक needle से होता है. एक there is a specific needle for bone biopsy जो ट्यूमर के अंदर वो needle डालते हैं. Most of the time they do this procedure under some form of anesthesia, either local anesthesia, regional anesthesia or general anesthesia depending on the situation. अगर young बच्चा है तो definitely we will give him proper general anesthesia because he cannot tolerate or they won't be able to cooperate. So depending on the age, location, size of the disease, we decide what form of anesthesia works. Lot of times we may have to do this procedure under CT guidance, मतलब some sort of image guidance में करना पड़ता है because अगर ट्यूमर बहुत डीप है बॉडी में, स्पाइन में है, पेल्विस में है, छोटा है तो उसे लोकेट करना भी डिफिकल्ट हो सकता है. इसके लिए अंडर सीटी स्कैन बीमारी को लोकेट करते हैं और उसके अंदर नीडल डाल के वहां से टिश्यू सैंपल कलेक्ट करते हैं. So there are a lot of ways of doing that, but in majority of the cases ये एक needle से होता है. It is not an open kind of surgery. जब हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं तो उसी सैंपल को हम उसका एक सैंपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं जो उसको कल्चर एंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करके ये पता करते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं. अगर इन्फेक्शन है तो कौन सी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो इसमें कौन से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं. अगर ये द अदर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ बोन इन्फेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस. सो ये टीबी की बीमारी है या नहीं ये भी बायोप्सी के बाद पता चल सकता है. After that, once we know कि we are dealing with bone cancer, ये primary bone cancer है, तो then the next important step is to stage the patient. मतलब हमें ये जानना है कि ये बीमारी एक ही जगह पे है या फैला हुआ है. दिस इज अ रिस्क विद एनी कैंसर. इसलिए हम कैंसर से डरते हैं क्योंकि वो बीमारी सिर्फ एक जगह पे नहीं रहता. इफ इट स्टेज इन द बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो बॉडी में स्प्रेड हो सकता है और स्प्रेड होने के बाद दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है. एक फैला हुआ कैंसर जानलेवा हो सकता है. वंस द कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज उसको ट्रीटमेंट करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है. सो वी डू व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेजिंग. इन बोन कैंसर स्टेजिंग earlier we used to do two major investigation. One is bone scan जो बॉडी के पूरे बोन्स को स्क्रीन करता था and we do a CT scan of chest. लंग्स में बीमारी फैला है या नहीं ये देखने के लिए because primary bone cancer means sarcomas in 90% of the cases spread to the lungs. इसके लिए lung screening and full body skeletal screening मतलब bones का screening used to be the way we would do staging. But nowadays there is a new investigation called as PET CT scan. PET CT scan is a very useful modality for full body screening. Head to toe screening होता है. उसमें ये पता चलता है कि ये बीमारी एक ही जगह पे है या कहीं और फैला है या नहीं. अगर ये सेकेंडरी बोन कैंसर है मतलब बायोप्सी से ये पता चला कि ये बोन से निकली हुई कैंसर नहीं है, दूसरे ऑर्गन की कैंसर जो बोन में स्प्रेड हुआ है, तो देन
अगेन पेट स्कैन हेल्प्स, वो ये पता चलता है उसमें कि ये अदर देन बोन्स कोई और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है या नहीं, एंड दूसरा ये कौन से ऑर्गन से निकला है। यू नो लॉट ऑफ केसेस वी गेट टू नो कि ये प्राइमरी कैंसर ब्रेस्ट से निकला है या थायराइड से निकला है या प्रोस्टेट से निकला है। सो ऑल दोस थिंग्स आर सॉर्टेड व्हेन वी डू अ स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन। Once all that is done, we come to treatment. So treatment will depend on what we are dealing with. Primary bone cancers में अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द स्पेसिफिक डायग्नोसिस। अगर ये ऑस्टियोसार्कोमा करके डायग्नोसिस आता है तो उसमें कीमोथेरेपी एंड सर्जरी ये दोनों मोडालिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर डायग्नोसिस आता है कॉन्ड्रोसार्कोमा या कन्वेंशनल कॉन्ड्रोसार्कोमा, उसमें सिर्फ सर्जरी से इलाज होता है, उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन का ज्यादा रोल नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर ईविंग सार्कोमा का डायग्नोसिस आता है तो उसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी तीनों मोडालिटीज को यूज करने का ऑप्शन है हमारे पास। कीमोथेरेपी तो डेफिनेटली देना पड़ता है। सर्जरी और रेडियोथेरेपी में वी जनरली गेट टू चूज, रेयरली हमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है बिसाइड्स कीमोथेरेपी। सो एग्जैक्ट डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम आगे का ट्रीटमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अगर कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है ऐसा रिपोर्ट आता है ऑन द स्टेजिंग, देन वी मे नॉट बी एबल टू क्योर द पेशेंट। तो इन दैट सिचुएशन इसे पैलिएट कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को कितनी अच्छी तरह से हम कंफर्टेबल रख सकते हैं, इस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट का डिसीजन लेते हैं। व्हेन इट इज मेटास्टैटिक डिजीज, मतलब ये कोई सेकेंडरी बोन कैंसर है जो दूसरे ऑर्गन से बोन में स्प्रेड हुआ है, तो जनरली इन दिस सिचुएशन cure in majority of cases is not possible, but with good treatment we can give a very good quality of life to the patient and we can prolong the life of the patient. So it really depends on कौन से ऑर्गन से बीमारी आई। अगर ये ब्रेस्ट कैंसर बोन में स्प्रेड हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट विल बी प्राइमरीली बी along the treatment lines for breast cancer। अगर ये थायराइड कैंसर बोन में स्प्रेड हुई है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक थायराइड कैंसर। बोन का ट्रीटमेंट तब आता है जब हमें ये इवैल्यूएशन के बाद ऐसा पता लगता है कि ये बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, तो देन वी मे हैव टू ऑपरेट ऑन दैट बोन एंड फिक्स दैट बोन टू स्ट्रेंथन दैट एंड अवॉइड अ फ्रैक्चर। अगर रेयरली अगर पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आता है तो वी मे हैव टू फिक्स दैट फ्रैक्चर सो दैट पेशेंट का पेन चला जाए एंड पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ रिस्टोर हो, सो दैट ही कैन स्टार्ट वॉकिंग एंड यूजिंग हिज लिम्स अगेन। अगर वो स्पाइन में बीमारी स्प्रेड हुआ हो तो अगेन depending on what is the extent of spread, what are the kind of complications he has come up with, उसी हिसाब से स्पाइन में या तो सर्जरी करना पड़ता है या रेडिएशन का ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। Now when it comes to primary bone cancer, मतलब जो कैंसर सिर्फ बोन में ही निकली हुई हो, अगर वो बीमारी कहीं फैली नहीं हो, तो जनरली वी have to treat them with some form of surgery. Chemotherapy certainly is a part of the treatment, especially Ewing sarcoma, osteosarcoma में। As I said, chondrosarcoma में chemotherapy का role generally नहीं है, but in all these there is a major role for surgery. So when we are trying to cure this patient, we have to treat them with all the available modalities. So what is the role of surgery? Surgery में हम whenever we are dealing with any form of primary bone cancer या sarcoma, we operate and remove that affected part of the bone. Like most common area for bone cancer is around the knee, जो thigh bone का lower part है और leg bone का जो upper part है, these are called as femur and tibia. So around the knee is the most common area. Similarly, it can happen around the hip, around the shoulder, around the elbow and around the wrist. These are some of the most common areas for primary bone cancer. In that situation, हम अफेक्टेड बोन का पूरा सेगमेंट को निकालते हैं, नॉट जस्ट द कैंसर वी रिमूव इट विद अ मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। मतलब आजू बाजू के नॉर्मल टिश्यू के साथ निकालते हैं। द आइडिया इज कि कैंसर को पूरी तरह से निकालो और ऐसे निकालो कि वो उस जगह पे फिर से रिलैप्स नहीं होना चाहिए। नाउ दैट इज वन पार्ट ऑफ द सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं एक्सिजन। नाउ द इशू इज आफ्टर यू एक्सरसाइज सच अ लार्ज पीस ऑफ बोन, यू कैन नॉट लीव द लिम्ब लाइक दैट। तो वो काम ही नहीं करेगा बिकॉज बोन इज इनकम्प्लीट, यू हैव रिमूव्ड हाफ ऑफ अ मेजर बोन, so you have to do something to reconstruct that. So any form of bone cancer surgery for primary bone cancer में दो major steps रहते हैं। one is resection, which is called as wide excision, where we remove the cancer with margins, and
The next important step which is done at the same sitting, मतलब ये एक ही सर्जरी में होता है, जिसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन. जो आपने बोन को डैमेज किया है उसे आपको रिपेयर भी करना है. So in majority of cases, we use what is called as mega prosthesis. Mega prosthesis means these are major large implants जो ready-made रहता है, which we have. It is available as a pre-sterilized components जिसे हम on table depending on कितना bone निकला, patient का bone के size क्या है, अलग अलग उसके pieces रहते हैं, वो assemble करके we create a reconstructed joint which is implanted into this patient. Reconstruction is a very large topic because इसमें बहुत सारे different modalities हैं which we have to use, and all of this is tailored according to the patient's age, patient's size, location of the disease, कितना bone निकालना पड़ा है, all of those things have to be taken into consideration. Most of this is decided before surgery. इसे कहते हैं pre-operative planning, and we decide based on all these information कि इसमें वाइड एक्सेशन के बाद हमें कौन से सारे रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. Accordingly, we generally have a plan A, plan B, plan C on table because sometimes during surgery you may have to alter your plan of reconstruction. So all of that is taken into account during the pre-surgery planning stage for the patient, and all of this we discuss with the patient. हर procedure का एक benefit and consequences रहता है, so we need to decide and come to a decision regarding what is the most acceptable treatment for a particular patient. So that is what is treatment for bone cancer. Now, once all of this is over, once the treatment is over, that doesn't mean we forget our patient. All cancer patients have to follow up with their doctors at a regular basis. And this follow up generally we do for up to 5 years. In the first couple of years, it is more intensive. Matlab every 3 to 4 months we see our patient. In the last 2 years, generally it is once in 6 months. So that is when at 5 years post surgery, if the patient is disease free, मतलब बीच में कहीं relapse नहीं हुआ हो and patient is fine throughout, that is when we may declare the patient that he is free of cancer. So let me tell you, just because you have bone pain, you have bone swelling, you have some sort of disability doesn't mean you have cancer. It is just one of the possibilities. But important thing is you should seek attention from your doctors and get that assurance from them. Don't sit at home and ignore these complaints, because any symptoms is your body telling you that there is something wrong and you need to look into it. I see a lot of questions here. Let me see whether I can answer some of them. Amit, sorry. Meghna Das, your question is orthopedic cancer curable? Yes, cure is certainly possible in orthopedic cancers. Of course, we cannot say that all of orthopedic cancers can be cured, but when the patient comes to us in time, when the diagnosis is done well, and when the treatment goes right, a large number of orthopedic cancers can be cured. Mr. Amit Mohanty, you have asked how does bone cancer get diagnosed? I think I have already gone into the details of that. I hope that is sufficient enough to answer your questions. Sneha ji, hello. You said hello. Hello to you too. Krishna ji, you have asked what is osteosarcoma symptoms? Like any other bone tumor, osteosarcoma symptoms typically are pain and swelling. These are the most common symptoms for osteosarcoma. Besides that, what you should know is majority of the osteosarcomas are seen in the young people. So most of the osteosarcoma patients are between the age of 10 and 20. So these are all teenagers. Ankita has asked, what is the main cause of orthopedic cancer? I think I have gone into the details of that. I hope that answers your question. Majority of the orthopedic cancers, there is no known cause. But as I said, secondary bone cancer is caused by cancer of some other organ which has spread to the bone. Mishra ji, Shubham, hello. Mr. Rakesh, hi to you too. Mr. Rakesh Chandra Tiwari, you asked, is orthopedic cancer a primary cancer? I think again I have answered that question in detail. I hope
you are satisfied with that? Shubham ji, you are asked, can orthopedic, I believe you are saying, can an orthopedic surgeon diagnose cancer? Yes, an orthopedic surgeon can, help you in, at least identifying a possibility of a cancer. And if he follows these methods, definitely why not? Tarunji, you asked, how long can we live with bone metastasis? That is a very interesting question. See, whenever you have bone metastasis, it means it is a stage 4 uh, cancer of whatever primary cancer that is, whether it is breast cancer, thyroid cancer, kidney cancer, or lung cancer, or any other cancer. I mentioned these few because these are the most common cancers which are known to go to the bone. That is lung cancer, thyroid cancer, breast cancer, kidney cancer, and prostate cancer. Now, how long can someone survive with bone metastasis? Is a complex question to answer, but let me tell you, it really depends on what is the extent of spread to the bone. Nobody generally dies of cancer in the bone because it is not a vital organ, but it can create a lot of uh, it can affect their quality of life because of pain and disability. Whenever bone cancer has spread to the bones, means it is stage 4 cancer, stage 4 of that particular cancer. Now it depends on what is the primary. See, if it is lung cancer that has spread to the bone, generally in majority of cases it has a poor prognosis. Matlab survival is generally limited. Of course, even now that is changing because there are a lot of new drugs that are coming in, which is changing the scene for lung cancer patients. Again, if it is breast cancer, if it is a hormone sensitive breast cancer, even with bone metastasis, patient can survive for many years. If it is thyroid cancer and if it is a well differentiated thyroid cancer like a papillary or a follicular thyroid cancer, they may respond very well to radioiodine and patient can live for many, many years, even decades with metastatic thyroid cancer. On the other hand, even with kidney cancer, patient can survive for a couple of years. But if it is stomach cancer or liver cancer which has gone to the bones, then or lung cancer, then the prognosis is poor. So it really depends on what is the cancer which has spread to the bone and what is the extent of spread in the bone, and also whether this cancer has spread to some other vital organs like brain, liver, or lung. So majority of the fatalities occur because of involvement of vital organs like brain, liver, and lung. I hope that answers your question. Deepa ji has asked, what is orthopedic surgical oncology? Well, orthopedic surgical oncology is a subspecialty of orthopedics where we deal with bone tumors and musculoskeletal tumors. Means not just bone tumors, but tumors of the muscle and basically tumors which are related to the extremities like your arms and legs, tumors which spread to the spine, back muscles, and abdominal wall muscles and the pelvis. What Snehaji has asked, what lifestyle changes can I make to prevent a recurrence of this condition? Snehaji, there is nothing like a lifestyle modification that will, you know, have an impact on relapse of this condition. The most important thing is to keep a good follow up with your doctor. If one has already been diagnosed with cancer, has been treated, then the idea is to detect any possible relapse as early as possible so that we can deal with it effectively. Drishya ji, you have asked what is the survival rate of bone cancer? That is a very open question. As I said, it really depends on whether the patient has come to you before it has spread to some other place or not, or whether it is localized, how early the diagnosis has happened, and how well the diagnosis has happened, and how well the treatment has gone. So there are a lot of variables that will affect the survival. But let me tell you, if it has been detected in time, it has been diagnosed well, and if it has been treated completely, a large number of bone cancer patients can be uh, cured of the disease. I am talking about primary bone cancers, not about secondary bone cancers. So, what is the most common type of orthopedic cancer? So, when it comes to primary bone cancer, the most common cancer is osteosarcoma.
Besides osteosarcoma, it is Ewing sarcoma and chondrosarcoma. These are primary bone cancers. When it comes to secondary bone cancer, well, breast cancer and prostate cancer are the most common cancers. Breast cancer, of course, we know primarily we see in ladies, in women. Rarely it can even happen in men. Prostate cancer is typically a disease only of the males, and these are the common cancers which can affect the bone. Besides that, lung cancer is another common cancer. And in India, one of the most common cancers is head and neck cancer, that is mouth and oral cavity related cancer. Um, Nishadi has asked, can stage 4 osteosarcoma be cured? Well, it depends on what is the situation of this stage 4 osteosarcoma. If the cancer, osteosarcoma, has just spread to the lungs, and the spread to the lungs is very limited, like 3 or 4 nodules are there in the lung, and if the patient responds very well to treatment, and if the patient undergoes appropriate surgery to the area of primary disease, and if the lung metastases are removed, then even in such situations, about 20 to 25% patients of osteosarcoma can be cured. But if the spread of disease is extensive, there are multiple lesions in the lung which is not operable, or if it is spread to other bones, then cure may not be possible. Shivaji, how does Shiva ji has asked, how does bone cancer affect the body? Well, I already described all the symptoms of bone cancer. Primarily, it affects the bone by making it weak and susceptible to fractures. So, it will lead to a lot of pain. It will lead to swelling. It will lead to disability because of the pain. And sometimes, as I said, it can cause pathological fracture, which can be very disabling. And if it spreads to the spine, it can cause uh, back pain. And वहाँ से अगर spinal cord के ऊपर if it causes compression, then it can cause paraparesis or paraplegia. That is weakness in the legs and loss of bladder and bowel control. I guess I have finished all the questions, and I hope you are satisfied with my answers. If you have any more concerns, you can please get in touch with me at Surya Hospital. I will be available to you anytime here. And thank you for all tuning in. And I'm so glad that all of you have interacted with me and asked me very reasonable and very sensible questions. Thank you.